Useful newspaper vocabulary for CSS, PMS, and competitive exams. 1. Hybrid, adjective noun. Meaning: a combination of two different elements, often referring to mixed systems or forms. दो मुख्तलिफ अनासर या निज़ामों का मिलाप, मखलूत. Synonyms: mixed, मखलूत. Combined, मिला हुआ, composite, मुरक्कब. Antonyms: pure, खालिस, separate, अलहदा. Unmixed, गैर मखलूत. Example sentence: The new car is a hybrid, running on both electricity and petrol. नई गाड़ी एक हाइब्रिड है जो बिजली और पेट्रोल दोनों पर चलती है. 2. Hubris, noun. Meaning: excessive pride or self-confidence that leads to downfall. हद से ज़्यादा गुरूर या तकब्बुर. Synonyms: arrogance, takabbur. Pride, गुरूर. Conceit, खुदपसंदी. Antonyms: humility, inkisari. Modesty, आजिज़ी. Meekness, फरमाबरदारी. Example sentence: His hubris prevented him from listening to good advice. इसके गुरूर ने उसे अच्छा मशवरा सुनने से रोक दिया. 3. Fabricated, adjective. Meaning: made up or invented, often to deceive. गढ़ा हुआ झूठा. Synonyms: false, झूठा. Invented, ईजाद किया हुआ fake, नकली. Antonyms: genuine, हकीकी. Authentic, असली. True, सच्चा. Example sentence: The report was fabricated to mislead the public. आवाम को गुमराह करने के लिए रिपोर्ट घड़ी गई थी. 4. Lawfare, noun. Meaning the use of legal systems and principles to damage or delegitimize an opponent. कानूनी निज़ाम को मुखालिफिन को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना. Synonyms: legal warfare, कानूनी लड़ाई. Judicial harassment, अदालती हरासानी. Litigation tactics, मुकद्दमाती हिकमत अमली. Antonyms: fair trial, मुंसिफाना मुकद्दमा. Justice, इंसाफ. Due process, कानूनी तरीक़ा-ए-कार. Example sentence: The opposition accused the government of using lawfare to silence critics. हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ़ ने हुकूमत पर नाक़दीन को खामोश करने के लिए कानूनी जंग इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया. 5. Denotify, verb. Meaning: to officially cancel or withdraw a notification or announcement. सरकारी तौर पर नोटिफिकेशन मनसूख करना या वापस लेना. Synonyms: cancel, मनसूख करना. Revoke, वापस लेना. Annul, काल अदम करार देना. Antonyms: approve, मंजूर करना. Confirm, तस्दीक करना. Notify, इत्तला देना. Example sentence: Several members of the Assembly were denotified by the Election Commission. इंतखाबी कमीशन ने असेंबली के कई अराकीन को डिनोटिफाई कर दिया. Unprecedented, adjective. Meaning never done or known before without previous example. ऐसा जो पहले कभी ना हुआ हो, बेमिसाल. Synonyms: unmatched, बेमिसाल. Exceptional, गैर मामूली. Extraordinary, गैर मामूली. Antonyms: common, आम. Ordinary, मामूली. Usual, रिवायती. Example sentence: The country faced an unprecedented political crisis last year. मुल्क ने पिछले साल एक बेमिसाल सियासी बहरान का सामना किया. Usurp, verb. Meaning: to take power or rights illegally or by force. गैर कानूनी तौर पर कब्जा करना, हक छीन लेना. Synonyms: seize, कब्जा करना. Appropriate, गस्ब करना. Take over, control, संभाल लेना. Antonyms: surrender, हथियार डाल देना. Relinquish, छोड़ देना. Return, वापस करना. Example sentence: The dictator usurped the rights of the people. आमर ने अवाम के हुकूक गज़ब कर लिए. 8. Achilles' heel, noun phrase. Meaning: a weak point in someone's character or system,
that can lead to failure. कमजोरी, ऐसा नुक्ता जो नुकसान पहुंचा सकता है. Synonyms: weakness, कमजोरी. Vulnerability, hassas nukta. Flaw, aib. Antonyms: strength, takat. Advantage, fayda. Asset, asatha. Example sentence: his inability to control anger proved to be his Achilles heel. अपने गुस्से पर काबू न पाना उसकी कमजोरी साबित हुई. 9. Due process, noun. Meaning: fair legal procedures that protect a person's rights. कानूनी तरीक़ेकार जो किसी शख्स के हुकूक की हिफाजत करता है. Synonyms: legal procedure, कानूनी अमल. Fair trial, मुंसिफाना मुकद्दमा. Justice, इंसाफ. Antonyms: injustice, नाइंसाफी. Arbitrary action, मनमानी कार्रवाई. Lawlessness, बेकायदगी. Example sentence: the accused was punished without due process. मुल्जिम को बगैर कानूनी तरीक़ेकार के सज़ा दी गई. 10. Abandoned, verb adjective. Meaning: given up completely, left behind. छोड़ देना, तर्क कर देना. Synonyms: deserted, छोड़ा हुआ, forsaken, तर्क किया हुआ. Relinquished, छोड़ देना. Antonyms: maintained, टाइम रखना. Continued, जारी रखना. Retained, महफूज रखना. Example sentence: the leaders abandoned their principles when they came to power. रहनुमाओं ने इक़्तिदार में आते ही अपने उसूल छोड़ दिए. Reconciliation, noun. Meaning: the act of making peace or bringing harmony between opposing sides. Musalehat, सुलह करवाना. Synonyms: settlement, tasifa. Harmony, hamahangi. Agreement, ittifaq. Antonyms: conflict, tanaza. Discord, na-ittifaqi. Dispute, jagada. Example sentence: a reconciliation commission was proposed to heal the political divide. सियासी तक़सीम को ख़त्म करने के लिए मुसालहती कमीशन तजवीज़ किया गया.